Now let's see, management has a science. Now we have seen that management is an art. Now we'll see how management is in science. Now can someone tell me what is science? What is science? Anyone can tell me? You can look at the screen also and you can give the answer. See, very first line, science is a systematic body of knowledge which is universally accepted. Okay, when science is given certain thing, okay, when the science is given certain thing, it is universally accepted. Okay, see, when the science is telling that blood group, blood color is red, so it is red. It is universally acceptable, the red color. Okay, Devendra, please. Yeah, I'm able to. Yeah, you can hear me, student? Student, I'm audible? Yes, ma'am. Okay, now let's see. Science is a systematic body of knowledge which is universally acceptable. Okay, that means okay, whenever science is telling something, it is universally acceptable. Okay, see, science is telling that you have to wear the mask, okay, for this COVID situation. That is universally acceptable. It is not that only Indian people are wearing the mask. Now the world people, all the worldwide people are wearing the mask, okay, to protect themselves from this virus. So when science is telling something, it is universally acceptable. Now see, science can be broadly divided into two groups. One is physical science and one is social science. Now physical science like physics, chemistry and mathematics are the exact and accurate. Okay, see, when physical science like chemistry or the mathematics is doing something, they are accurate. This is universally acceptable, but when social science is not exact because social science is dealing with the human being. Okay, so remember there are two types of science. One is physical science. Physical science examples are physics, chemistry, and mathematics. Now, whatever the lab experiments are done for the physics and chemistry, that is universally acceptable. What are the mathematics formula that is universally acceptable? But when you talk about the social science, so social science that is dealing with the human being, and human being is not accurate. Okay, the need, the preference, the knowledge, the demand, everything is changing over a period of time. Whatever you like today, maybe you don't like tomorrow. So social, that means human being, you cannot predict the human being. So social science is inaccurate science. See, you'll get a question for the objective also. Dash science is the accurate science. Okay, physical science is an accurate science, is a correct science, but social science is a not exact science. Now let's see how management is a science. First is systematic decision making. See, in a business, management need to make a systematic decision. For this purpose, the manager need to collect that right information from the right source at the right time. See, in the business, we are spending crores of rupees. Okay, so you cannot take the random decision. The management have to sit, have to collect all the information. The management has to receive the information from the correct source. Okay, before taking any decision regarding to the business. So business decision cannot be take overnight. Okay, there will be several meetings. Suppose if the management want to introduce a new product into the market, so overnight a new product cannot be introduced in the market. The manager, the board of directors, the top level management will sit and analyze the situation where there is a need for the new market, where there is a need for the new product. Okay, who are the competitors for the new product? So it is totally a systematic decision making. Second, output may vary, input being the same. You know the difference between input and output. Can you tell me what is output and what is input? Anyone? Please speak up, student. Say yes or no. What is input and what is output? Hello, I am audible, student. At least give me some response. Yes, ma'am. So what is input and what is output? What is the meaning of input? Input means what? See, suppose in the examination, 2 chapters are there. Okay. And if you studied only one chapter, okay, chapter 1 is for 25 marks and chapter 2 is for 25 marks. Okay. So total paper is for 50 marks. But you have studied only chapter 1. So what marks you will get? Half 25. 25, right? So input is what you have put. So definitely if you work for 25 marks, the output will be 25 only. Okay. But it is possible कि 25 marks ही मिले आपको, 25 ही मिलेगा.
No, No, ma'am. ma'am. नहीं, 20 No, भी ma'am. you should get 10 also, you should get 15 also, right? Right? Yes or Yes, no? ma'am. Yes. Right, ma'am. Sometimes it's happens, see, कि when you give the question, जब आप कॉलेज में पेपर देते थे, you come out and you tick mark के ये right, you will get 70, you will get 80, but आपको उतना मिलता नहीं था. That means आपका इनपुट कितना भी है, आउटपुट अलग हो सकता है. ओके, तो आउटपुट में भी वेरी, ठीक है. That means we expected, we have worked hard कि हमने, we have new machinery, we have new output, new input, everything, but it is possible कि हमारा competitor आ गया and we'll get output different. तो input same हो सकता है, but output में भी different. Input मतलब हमने business के अंदर क्या डाला, हमने कितना effort लिया और हमको बदले में क्या मिला. Okay, process of management is universally followed, as I told you कि process of management, like for example discipline, authority and responsibility, what are the things given by the Henry Fayol or the Taylor. It is not applicable only for Indian management, it is applicable for the each and every management. It is universally acceptable. See, management in all organization, whether large or small, all levels follow the process of management. All managers need to plan, to organize, to direct, and to control the activities. That means if I'm telling that we have to follow this, we have to, the manager has to plan, the manager has to organize. This is not only applicable to India, it is applicable to the whole world. So the principle of management is followed by each and everywhere. That's last point is principle of management are universally acceptable. Same way, that means see, you can see author principles of management such as division of work, unity of command, discipline. This all principle has given by the Henry Fayol. And yesterday I told you that Henry Fayol is not from India, but whatever suggestion, whatever the principle of management Henry Fayol is given is definitely acceptable by the whole world. That is, it is universally acceptable. So on the basis of this, we can conclude that management is in science also. Management is not only arts, management is in science also. So first we have proved that management is an art, now management profession. Okay, we have seen management as an art, we have seen management as in science. Let's see how management as in profession. Now, what is profession? Profession is an occupation carried on by the professional people like doctors, lawyers, architects, etc. See, profession is an occupation, definitely. Occupation is there, but these people required a degree. For example, see, डॉक्टर्स हैव अ डिग्री, डॉक्टर्स के पास अपनी डिग्री होती है, लॉयर्स के पास अपनी डिग्री होती है, आर्किटेक्ट्स दे हैव देयर डिग्री. ओके, सो दिस रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर किसी का दिल चाहे तो वो डॉक्टर बन सकता है. इफ आई वांट टू टुमारो आई विल बी डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर बन सकती हूँ. हेलो हेलो, No, ma'am. नो. और अगर किसी डॉक्टर को ऐसा लगता है कि वो क्लास में जाके टीचर बन के, प्रोफेसर बन के पढ़ाए, तो वो पढ़ा सकता है. No. नो, व्हाई? बिकॉज डॉक्टर्स के पास डॉक्टर्स की डिग्री होती है जिसमें वो लिखा होता है कि उनको मेडिकल की डिग्री है, वो कर सकते हैं. लॉयर्स के पास उनकी बार काउंसलिंग की डिग्री होती है, टीचर्स के पास उनकी टीचिंग की डिग्री होती है. एंड ये जो सारी कैटेगरीज है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, ये सारे के सारे प्रोफेशनल कैटेगरीज में जाते हैं. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, फर्स्ट इज अ फॉर्मल एजुकेशन. अ ट्रू प्रोफेशनल नीड टू हैव अ मिनिमम फॉर्मल एजुकेशन. फॉर एग्जांपल, सी, इफ समवन वांट्स टू बी अ डॉक्टर, तो उसको BUMS करना पड़ेगा या MBBS करना पड़ेगा. उससे पहले आफ्टर 12th स्टैंडर्ड ही हैज टू अपेयर फॉर द नीट एग्जामिनेशन. लॉयर्स के लिए भी अपना होता है, लॉयर्स को दे हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, टीचर्स को भी दे हैव टू गिव द एग्जामिनेशन. ओके, उनके पास डिग्री आती है. तो देयर इज अ फॉर्मल एजुकेशन फॉर ईच एंड एवरी फील्ड. आर्किटेक्ट, those who are doing the engineering field, वो लोग architect होते हैं. So formal education is very much important from recognized university. Now, what is the meaning of recognized universities? That, see, now your college Narayan Guru is recognized to Mumbai University, and Mumbai University has a recognized university worldwide. Okay, that means कि whatever degree you are taking, that university should be registered with the government. Okay. Next, fees. The professional normally charge fees for the service. See, you go to the doctor. Okay, the doctor charge fees for you. If you appoint a client, the client will charge, if you appoint the lawyer will charge fees for you. That means those who are professional, if they are giving services to you, definitely they are charging fees from you. Okay. The third point is expert knowledge. Professional require expert knowledge in the particular discipline.
जो भी प्रोफेशनल होते हैं उनके पास एक एक्सपर्ट नॉलेज होती है। ओके, फॉर एग्जांपल सी डॉक्टर्स आई स्पेशलिस्ट होते हैं, ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, लॉयर्स में क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, सिविल लॉयर्स होते हैं, टीचर्स में सी फाइनेंस की टीचर्स होती है, अकाउंट्स की टीचर होती है। तो दिस प्रोफेशनल्स के पास क्या होता है, एक्सपर्ट नॉलेज होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइसेंस, दैट मीन्स उनको अपने लाइसेंस होना पड़ता है। सी आप डॉक्टर्स को विजिट करते हो तो वहां पे उनका सर्टिफिकेट लगा होता है, टीचर्स के पास सर्टिफिकेट होता है, लॉयर्स के पास सर्टिफिकेट्स होता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफिस, उनका अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है। डोंट प्ले विद द स्किन, हिज नेम इज विजिबल, जो स्क्रीन के साथ खेल रहा है। और जो डॉक्टर्स होते हैं उनका ऑफिस होता है, जो लॉयर होते हैं, जो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, उनका अपना एक ऑफिस होता है, इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है। दे आर सोशली रिस्पॉन्सिबल, प्रोफेशनल आर सोशली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल सी आपने लॉयर को अपॉइंट किया तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉयर कि वो आपके बिहाफ में केस लड़े, आपको केस जिताए। अगर अपने डॉक्टर्स के पास गए, सपोज अगर आपको फीवर आ रहा है या कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट डॉक्टर, सॉरी, कि वो आपको अच्छी तरह से ठीक करे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, द प्रोफेशनल में स्पेशलाइज इन द पर्टिकुलर फील्ड। जो भी है, देखो वहां पे एग्जांपल दिया है, हार्ट स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट। सपोज अगर किसी को कान में दुख रहा है तो ही कैन गो फॉर ENT स्पेशलिस्ट। अगर किसी की आईज का प्रॉब्लम है, ओके, अगर किसी को अपने घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है तो वो सिविल लॉयर के पास जाएगा। अगर किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है तो वो क्रिमिनल लॉयर के पास जाएगा। तो देयर इज अ स्पेशलाइजेशन फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी। देयर इज अ टीचर स्पेशली फॉर अकाउंट्स, जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, देयर टीचर्स स्पेशली फॉर द थियरी सब्जेक्ट, वो उनके अपने स्पेशलाइजेशंस होते हैं। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, द एक्शन ऑफ द प्रोफेशनल आर गाइडेड बाय द फील्ड। दैट मींस कि उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, उनके रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सी डॉक्टर्स के लिए नो संडे, नो हॉलीडे, है ना। आपने सुना होगा ना कि डॉक्टर्स जो है वो संडे के दिन भी काम करते हैं, उनको कोई हॉलीडेज नहीं मिलती है। वो उनके हर प्रोफेशन को एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया है जो उनको फॉलो करना पड़ता है।